Hello everyone, welcome to IQRA IAS, and today we'll be covering current affairs from 31st of May to 6th of June. So, as always, without wasting any time, let's just directly get into it. And the first topic this week we have is PM Cares for Children scheme. So recently we all have seen that there were many children who've lost both of their parents due to COVID-19. So basically, to support those children, our government has came up with a scheme called PM Cares. Actually, PM Cares existed before as well. तो यहीं से हम पैसा use करके we are going to support those children who've lost both of their parents during this pandemic, right? So, as I've told you recently, Prime Minister has announced this special PM Cares for the Children scheme. So, what are the features and everything we are going to read, and what is this for? This is basically to support those children who have lost both of their parents, and the features again. The most important thing, जो इस scheme के लिए है. The most important thing is that what are the features? इसमें क्या exactly क्या होने वाला है? So basically, our government is going to create a corpus. We are going to create a fund of rupees 10 lakh. ठीक है, हर एक child के लिए. And when he or she reaches 18 years of age, right? और उनके जो monthly expenses या monthly जो financial support है वो भी इस corpus fund से ही fund करने वाली है हमारी government, right? And when they will reach 23 years, so he or she will get the corpus amount. एक lump sum amount उनको मिल जाएगा उनके personal और professional use के लिए, right? Now this was about the monthly financial support. Then what about the education? What about the school education? How our government is going to support the education of those student? So for the under 10 years, so basically our government has divided the plans into the two parts. First जो 10 साल तक के बच्चे हैं, and then 11 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, right? So 10 years, under 10 years, what does the scheme have for them is the child will be given admission to the nearest KV school या फिर private school में. और अगर private school में भी उसका किसी भी बच्चे का admission होता है, उसका भी जो भी expenses हैं, PM Cares is going to give all those expenses, right? Now talking about the children who comes in the category of 11 to 18 years, उनके साथ भी almost similar things are going to happen. They can get the admission in the government schools, like for example नवोदय विद्यालय में उनको admission मिल सकता है, या फिर सैनिक schools जो होते हैं वहाँ पर उनको admissions मिल सकता है, right? And if case they want to live with their guardian, तो वो अपने guardian के साथ भी रह सकते हैं और कोई भी पास उनके जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर admission ले सकते हैं, right? या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में भी वो एडमिशन ले सकते हैं, एंड उस प्राइवेट स्कूल की जो फीस है दैट विल बी ऑन PM Cares, राइट? सो दिस वाज अबाउट 11 to 18 years वाली जो कैटेगरी है. नाउ टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशन, सो आफ्टर स्कूल what is how our government is going to support them. So यहाँ पर they can take the loan, ठीक है? और इस लोन में उनको क्या बेनिफिट होने वाला है कि इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, that interest will be paid by the PM Cares. तो उनको इंटरेस्ट कोई नहीं देना है, right? So they can take this education loan from the banks, right? So this was about the education sector. Talking about the health sector now, as you all must be aware about this आयुष्मान भारत स्कीम, जहाँ पर हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिला है. So similarly on the same lines, on the same ground, अभी हेल्थ सेक्टर में क्या होने वाला है, these orphan children, they are also going to get this insurance cover of 5 lakh, like per child 5 lakh rupees insurance cover उनको मिलने वाला है. And this is on the same lines of आयुष्मान भारत स्कीम. वहाँ पर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता था, और यहाँ पर चाइल्ड को ऐसे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, राइट? सो दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक. टू समराइज दिस, we've read about this new scheme जो कि बच्चों के लिए आई है, जो कि ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए आई है जिन्होंने पैंडेमिक में अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, राइट? we've read about the features of the scheme. we've also read कि what are the school education के features and what are the health वाले जो features हैं of the scheme. Alright, so that was all about this topic. Up next we have climate breakthrough summit.
So recently, a summit was held virtually in collaboration with WEF, that is World Economic Forum, and Mission Possible Partnership, UN Climate Championship, and UK Climate Change Conference COP26 के collaboration में there was this climate breakthrough summit which was held virtually recently. ये बेसिकली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिकली जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं हमारे pertaining to the climate sector, pertaining to the climate changes and the nature, they are going to see the progress in those critical sectors, like for example green hydrogen sector या nature है या इन सब के बारे में they're going to see. It also aims to discuss the breakthrough needed to achieve the net zero world in time. So यही एक्चुअली इसका मेजर ऑब्जेक्टिव या मेजर एम है, दैट दे आर गोइंग टू डिस्कस कि जो भी ब्रेक थ्रू हमें चाहिए है सो दैट वी कैन अचीव द नेट जीरो राइट वर्ल्ड इन ऑन टाइम पे हमें कि नेट जीरो अचीव कर ले. व्हाट इज दिस नेट जीरो गोल? सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बन न्यूट्रलिटी एंड इट इज़ बेसिकली, इसमें क्या होता है in this a state in which a country's, it is basically a state in which a country's emissions are compensated by the absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere, right? And और ये absorption हो कैसे रहा है? And this absorption of these emissions can be increased by creating more carbon sinks. Like for example, if we create more forest, that in turn will act as a act as creating more carbon sink. ठीक है, वो एक carbon sink की तरह काम करेगा and hence will be able to contain these carbon emissions. So this is what achieving the net zero on time, right? Now talking about the highlights of this summit. So इस summit के time पे United Nations made a call for coordinated actions. ठीक है, पूरा ग्लोबल एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए, पूरा एक ग्लोबल कम्युनिटी का, टू अचीव दिस नेट ज़ीरो एमिशंस. एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस नेट ज़ीरो कैंपेनिंग. ठीक है, apart from this, according to WMO report, there is a 40% chance of annual average global temperature temporarily reaching 1.5 degrees Celsius in at least one of the next 5 years. कि हम इतना तो पहुँचने ही वाले हैं in the next 5 years, right? जो हमारा Paris Agreement में decide हुआ था कि हमें 1.5 maintain करके रखना है. Like we'll target for 2, but we'll try our best for 1.5 degree कि इतना ही rise हो, right? उससे ज़्यादा ना हो. So according to Nature report, natural climate solutions have the potential to provide this climate mitigation to contain these climate changes. So we need to focus upon those solutions as well, right? That was all about this topic. To summarize, we have read about this summit. We have read that there is a need of breakthroughs जो climate changes को mitigate करने में help कर सके. We have also read about this new concept called net zero goal, right? Oh, okay then. Moving on. Up next we have UA scheme. So Ministry of Education has launched this scheme, right? This is basically, UA stands for Young Upcoming and Versatile Authors. ये basically authors को mentorship provide करने के लिए ये scheme है, right? So there could be two probable questions from the scheme कि it belongs to which ministry? So it belongs to Education Ministry, right? And it belongs to what? So there could be many options. So this belongs to basically mentoring the authors कि जो भी under 30 जितने भी हमारे country में authors हैं उनको एक mentorship हम provide करेंगे so that we can promote the reading, the writing and the book culture in the country, and also this will also promote our writings at a global level. So in order to make our writings more competitive, we have launched this scheme called UA scheme, right? And National Book Trust will be publishing all those books जो भी ये लिखेंगे, ठीक है? So National Book Trust is also helping it. This scheme is basically a part of India वो जो 75 project था उसमें basically यही था कि these young generations will be provided with the themes. Like for example unsung heroes पे उन्होंने अगर कुछ लिखना है, freedom fighters के ऊपर उन्होंने लिखना है, right? और national movements के बारे में ये सारे उनको topics दिए जाते हैं. They will have to write things on these topics, right? So basically 75 authors को हम select करने वाले हैं scheme के under throughout the India, और उनको ये सारे schemes ये सारे themes देने वाले हैं to write upon, right?
and also these authors will be trained by eminent mentors only, who of course are the authors only, और उनकी जो books जो भी ये लिखेंगे, national NBT, National Book Trust is going to publish it, right, in almost all the Indian languages, right? And if we publish it, if we translate them in all the Indian languages, that in turn will definitely going to promote our Ek Bharat Shresht Bharat का जो motto है, right? नेशनल बुक ट्रस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये एक पब्लिशिंग हाउस है, एज वी ऑल नो 1957 में इसको फॉर्म किया गया था, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओनली, राइट? सो पब्लिशिंग या कोई भी बुक्स का प्रमोशन, रीडिंग्स और एक प्रमोट करना इंडियन बुक्स को अब्रॉड, तो ये सब नेशनल बुक ट्रस्ट काम करती है, right? To summarize this topic, we've read there are two major things for a prelims perspective, especially that UA scheme belongs to Ministry of Education, and UA scheme, what is it all about? It is about mentoring the young authors under 30 jinki age hai, right? So that was it. Moving on. So up next we have Delta variant. So we all must be aware about this news कि अभी जो second wave आई थी, WHO has named this variant as Delta variant. जो अभी हमारे इंडिया में second wave आई थी, उस वायरस को second Delta variant WHO ने नेम किया है. So as per the study carried out by INSACOG, you know कि हमें पता है कि कोविड के टाइम पे ही कुछ 10 लेबोरेटरीज को इकट्ठा करके INSACOG करके एक बॉडी बनाई गई थी for better research purposes, right? So, as per the study carried out by INSACOG, Delta variant of COVID-19 is the primary cause for the second wave. We all know this, right? So, yeah, we have read this, and how are they going? How are they doing it? So, this nomenclature, this naming of the viruses for various variants of the coronavirus using Greek alphabets, right? तो वो Greek alphabets करके use करके इनकी naming दे रहे हैं basically. और ये नेमिंग दी क्यों जाती है? टू बेसिकली सिंप्लीफाई दी पब्लिक डिस्कशंस, ताकि हम एक डिफ्रेंशिएट कर सकें, ताकि हम एक एक सिंपल हो सके फॉर द पब्लिक to discuss about them, to know more about them, and also it also helps to remove the stigma from the names, right? Okay, now what is important here is to know about the classifications, the other types of classification. So CDC जो कि US का Center for Disease Control and Prevention है, उन्होंने इन वेरिएंट्स को, वायरसेस के वेरिएंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, right? The first category is variant of interest, second is variant of concern, and third is variant of consequences, right? We'll come to that. First, variant of concern, what is it? So it is basically a variant which is found in the discrete clusters. ये ऐसे discrete clusters में ये मिलता है, this variant, and we see a sudden spike or a sudden surge in the number of cases with a variant of interest, and this variant of interest may or may not escape the present immunity built by the antibodies or the vaccinations we are going under, and also the therapeutic test may or may not work for this variant of interest. This is what variant of interest is. Variant of concern, हमें पता ही है, we've already discussed this in our previous videos. The variant of concern is basically जिसकी transmissibility ज़्यादा होती है, which causes more severe infections, right? जिसपे vaccination या फिर ये जो treatments हैं वो उनकी effectiveness कम वो कम effective होती हैं, जो भी vaccinations और ये सब होती है. This is what variant of concern is. Variant of high consequences, what is this? This is basically ये है that has a clear evidence that prevention measures or the medical countermeasures have significantly reduced the effectiveness related to the previously circulating. So basically अगर हम preventive measures लेते हैं, अगर हम vaccination लेते हैं, तो this is clearly significant कि इसका जो effect, इसका जो impact करने का जो rate है वो काफ़ी कम हो जाता है if we take the proper measures, if we take the proper precautions, right? The fourth one is variant under investigation. This is not that important, but as the name indicates, ये वो वाले viruses या वो वाले variants होते हैं which are under investigation. तो इनके बारे में हमें वैसे भी ज़्यादा पता नहीं है. So that was all about this news. To summarize, we've read about Delta variant. हमने देखा कि कैसे वो Greek alphabets के basis पर naming करते हैं, so that एक public discussion easy हो जाए, ठीक है, और कोई भी स्टिग्मा ना रहे लोगों को
regarding the naming of the virus. Second important thing, we have read कि जो CDC ने classifications किए हुए हैं about different variants, that are variant of interest, variant of concern, variant of high consequences, and so on, right? Up next, we have World Health Assembly on malaria. So World Health Assembly, we all know, is the most important body of WHO, ठीक है? Executive, जितने भी basically executive काम होते हैं वो WHO ही लेती है in WHO. So they have recently adopted a resolution to end the malaria, right? Now what is that resolution? So this resolution is led by US and Zambia, right? And what is the aim of this resolution? कि जितने भी member states हैं उनको basically we have to encourage them to step up the progress, कि जो भी आप measures ले रहे हो, we have to tell all the member states कि जो भी आप steps ले रहे हो already, we have to encourage them, we have to step up the progress, we have to increase the investment, we have to do all those things which can help us, achieving our target much much faster, much earlier than we expect. So this is basically this resolution is all about. And how exactly are they going to do it? So the resolution called on countries to expand investment, कि अपना investment बढ़ाओ regarding in the area of malaria eradication. Also scale up the funding for the global response, right? So basically investment बढ़ाओ, अपनी research developments बढ़ाओ, new technologies use करो. So basically ये सब चीज़ें step up करो so that malaria could be eradicated, right? Talking about the WHO malaria program, global malaria program. So it is basically responsible for coordinating जितने भी global efforts जो भी चल रहे हैं ना हमारे to eliminate malaria. So ये उन सबको control करने का काम करता है, right? Now there's a technical global strategy to eliminate malaria, and it is called 2016 to 2030 करके एक strategy हमने use करी है. इसमें basically हमारा क्या aim है that we have to जो इसके जो targets है 2030 तक that we have to reduce the malaria cases by at least 90%. Mortality rates हमें 90% कम करना है, and we have to eliminate malaria in at least 35 countries and preventing the resurgence of malaria in the countries that are malaria free. तो जो malaria free हैं उन countries में दोबारा नहीं आना चाहिए malaria. We have to take certain steps that it doesn't come again. So we have to prevent the resurgence of malaria. Now what is malaria? Malaria किस चीज़ से होता है और क्या वो सब we should know this as well, the biology of this. So malaria is caused by Plasmodium parasite, female anopheles mosquito के काटने से हमें होता है. We all know this, and this disease claims more than 4 lakh lives annually, right? However, an estimated 6 million deaths and 1.5 billion cases had been averted since 2000. इतने हमने prevent किए हैं because we have taken certain steps, तो इससे हम prevent कर भी रहे हैं, right? To summarize this topic, we've read about this new resolution which has been taken by WHO on malaria to eradicate malaria, or what exactly comes under this resolution कि we have to step up the steps, we have to step up our our things जो हम malaria eradication के लिए पहले करते आ रहे हैं, तो हमें चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा ताकि malaria could be eradicated as sooner. All right. Up next, we have State of Finance for Nature report. Yeah. So State of Finance for Nature report अभी release हुई है, जहाँ पर ये recommend किया गया है कि हमें nature based solutions में ज़्यादा invest करने की ज़रूरत है, ठीक है? So this is the first point कि what has they recommended. So they've recommended कि हमें nature based solutions में ज़्यादा investment करने की ज़रूरत है, right? Second question which arises here, that who releases this report? So UNEP along with WEF, that is World Economic Forum, and the Economics of Land Degradation is the complete unit which releases this report, right? Now another very important question arises here, that what are nature based solutions? Nature based solutions है क्या? So I'll tell you in a very simple language कि जो भी हमारे यहाँ पर climatic changes हो रहे हैं, जो भी disaster risk reductions हैं, या फिर जो भी biodiversity losses हो रहे हैं, तो इन सब के solutions हम एक sustainable solutions की तरह अगर हम निकालें, the solutions which are sustainable too, तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक sustainably manage करते हैं, that is called nature based solutions, right? So
Nature-based solution refers to sustainable management. This word sustainable is really to be focused upon here, and the use of nature to tackle socio-environmental challenges like, for example, disaster risk reduction, climate change, biodiversity loss to food, water security, as well as human health. ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स को अगर हम सस्टेनेबली मैनेज कर पाते हैं, अगर बिना हमारे और एनवायरनमेंट को हार्म करे हुए, इफ वी reach to those solutions, they are called nature based solutions, right? What are the findings of this report? So it says कि जो current investment है nature based solution में, that is US dollar 133 billion, and this is about 0.10% of the global GDP, right? So we need to invest more. That this is what this entire report is recommending, and the largest proportion of the public investment is carried out by US only, right? Followed by China and then Japan and so on. ये वाले countries like for example Brazil हुआ, India हुआ, Saudi Arabia हुआ, they are likely to spending large amount of money too, but they do not report internationally comparable data according to the report. The private investment जो कि nature based solution में हो रहा है, वो ज़्यादातर कौन से sector से आता है, like for example commercial financing institute से आ रहा है, या जो भी asset management firms हैं उनसे आ रहा है, जो philanthropies जो है, like for example a lot of NGOs are there, so यहाँ से funds are in, right? What are the recommendations of this report? This report basically, first it recommended कि हमें investment बढ़ाने की ज़रूरत है. This I have already discussed, right? Second, it says कि 2050 तक the total investment will amount to $8.1 trillion, while annual investment should reach this by 2050. तो इतना होना चाहिए. This is what this report recommends कि this should be there. Second, what this report is recommended, that the report has called for a comprehensive system and a framework for labeling, tracking, reporting. ये सब हमें करना पड़ेगा so that we can have a better nature based solutions. Lastly, इन्होंने बोला है कि taxes में, agriculture policies में, या फिर trade related tariffs जो हैं, इन सब में हमें reforms लाने की भी ज़रूरत है, right? So to summarize this topic, nature based nature report, state finance for nature report released by UNEP, WEF and the Economics for Land Degradation, it says that there should be more investment in nature based solutions. And what are nature based solutions? We've already discussed. All right. So up next we have China's child policy. We all know कि China की जो youth population है वो decrease हो रही है. So and to contain this, China has come up with this 3 child policies. 2016 में initially they came up with 2 child policy, and now they've come up with 3 child policy क्योंकि वहाँ पर youth population काफ़ी जल्दी decline हो रही है, वहाँ पर aged population काफ़ी बढ़ रही है. So now to increase the youth population, they've come up with this 3 child policy, right? So China has announced this, right? चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, वी नो जो इनिशियली 1 चाइल्ड पॉलिसी थी ताकि वो अपनी अनचेक पॉपुलेशन को एक कंट्रोल में रख सकें, राइट? And that 1 child policy actually led to a lot of economic and environmental catastrophe, right? क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली बहुत ही ब्रूटल तरीके से ये 1 child policy को इम्प्लीमेंट कराया गया था. There were a lot of violation of the human rights while implementing this 1 child policy. बहुत सारे forced abortions कराए गए, sterilizations कराए गए, ठीक है? Human rights का violation हुआ, बहुत सारी unfair practices को practice किया गया to implement this 1 child policy, right? So the policy has been blamed for making China's population aged faster than the other countries. Of course, अगर आप एक ही ऐसे इतना strictly वो करके रखोगे तो of course आपकी जो पॉपुलेशन है वो बाकी कंट्रियों के हिसाब से तो ज़्यादा जल्दी एजड होने के ज़्यादा चांसेस है बेसिकली, ठीक है? टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है? देन दे केम अप विद 2 चाइल्ड पॉलिसी. 2016 में दे केम अप विद 2 चाइल्ड पॉलिसी क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी तो उनको दिख गया था कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, सो दे केम अप विद दिस 2 चाइल्ड पॉलिसी इन 2016 ओनली. बट this also didn't give a really impressive results, and now they've come up with this 3 child policy to tackle this aged this issue which they are facing. Youth का जो population यहाँ पर काफ़ी कम होता जा रहा है, right? So that was about this news. Up next we have Ambi Tag. Okay, so Ambi Tag है क्या and who has developed this device? So this is basically ये एक IoT device है, ठीक है, which is developed by IIT Roper, right?
और ये करता क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. सो दिस इज़ अ IoT डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, ठीक है. ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है वैक्सीन्स का या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन्स का, ब्लड का, बहुत सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से बहुत ख़राब हो जाते हैं, राइट. स्टोरेज फैसिलिटी हमारे कंट्री में इतना पुअर है कि बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा फूड हमारा वेस्ट हो जाता है. सो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका सेफली ट्रांसपोर्टेशन हो एक जगह से दूसरी जगह, लाइक वो एकदम फ्रेश रहे, उस चीज़ के लिए दिस Ambi Tag, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प द कंट्री. सो एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प. सो ये बेसिकली जो रियल टाइम टेम्परेचर है उसको वो नोट करके रखेगा, राइट. जो भी ऑफकोर्स द वैक्सीनेशन हुआ, जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हुए, सबको एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है. अगर आपको वो काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी दिनों के लिए अगर आपको वो प्रिजर्व करके रखने होते हैं, तो दे नीड अ परफेक्ट, दे नीड अ a good temperature which is required to them. So this device will be recording that real time temperature only, and hence will further help us to preserve the vaccines or the food and other things. All right. So Awadh, that is Agriculture and Water Technology Development Hub, and its startup has developed this device, right. Awadh basically IIT रोपर का रिसर्च सेंटर है जिन्होंने इस IoT डिवाइस को डेवलप किया है, राइट. ये हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर है, right. ये भी this could also be a probable question. So just two things you need to remember here, just 2-3 things you need to remember here. What is Ambi Tag? So I've already told you this is an IoT device. IIT Roper has developed this, और ये basically काम क्या करता है, it works in the transportation, right. Transportation को easier और safe बनाने के लिए this helps us. All right. Up next we have Horticulture Cluster Development Program, CDP. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने दिस क्लस्टर्स प्रोग्राम ये लॉन्च किया है. क्लस्टर्स प्रोग्राम इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये दिस बेसिकली एम्स एट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आइडेंटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर टू मेक देम ग्लोबली कंपेटिटिव. तो ये कुछ जगहों को, कुछ प्लेसेस को जो एक तरह की क्रॉप्स उगाती हैं, right, उनको they are going to group them together, they are going to make clusters out of them, right, ताकि हमारे पास एक जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिले और हम उनको इस तरीके से डेवलप कर सके सो दैट वी कैन गेट देम ग्लोबली कंपेटिटिव, राइट, एक्सटर्नली, ठीक है. तो हम उनको एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड कर सके. दिस इज़ द मेजर एम बिहाइंड दिस हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. I've told you this कि जो भी सिमिलर प्लेसेस हैं, जो सिमिलर कुछ आसपास की जो जगहें होती है जो सेम क्रॉप्स उगाते हैं, उनके हम ग्रुप्स बनाने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन देम सो दैट हम अपनी जो भी हॉर्टिकल्चर है उसको हम एक वहाँ ग्लोबल रीच उसको करा सकें और उसको अच्छा कॉम्पिटिटिव बना सकें, राइट. टॉकिंग अबाउट the next step of it or how, like what exactly is going to happen in this. So 53 horticulture clusters हमारे जो ministry है उन्होंने identify किए हैं. out of which 12 has been selected for the pilot launch of program. तो 12 में हम शुरू करने वाले हैं. हम अचानक से पूरे देश में ये नहीं शुरू करेंगे. We'll launch them on the pilot basis. तो 12 clusters में हम इसको launch करने वाले हैं and then we are going to launch them at further places if it works, right. What are the key features of this program? सबसे पहले तो this will address the major issues. जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो मेजर इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री में ये वो सबसे पहले इशू एड्रेस करने वाला है. लाइक फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर के टाइम पे जो प्री प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, देन प्रोडक्शन के टाइम पे, देन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक का जो भी खर्चा आता है या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, चीज़ें तो वैसे ही ख़राब हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, मार्केटिंग ब्रांडिंग के टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, दिस इज गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ देम. सेकेंडली, दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड टू लेवरेज geographical specialization and promote the integrated and market-led developments of horticulture. This is very amazing. We definitely need an integrated market system, right? Thirdly, this program is expected to converge with other initiatives of government such as Agriculture Infrastructure Fund. ये अगर ये अच्छा काम किया तो we will also be merging this, or we will also be this will also cover the other initiatives of the government,
right, in order to expand its reach, right? What are the significance of this program as to why are we doing it? So this program will benefit 10 lakh farmers, right? तो एक horticulture sector को हमारे को काफ़ी boost मिलेगा, and this program is also expected to improve the exports. Of course, that is the major aim behind it ना, कि हमें globally competitive बनाना है अपने horticulture products को. That is the entire aim behind this. तो exports को भी काफ़ी boom मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ 20% बूम का हम सोच रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट how it goes further. So to summarize this topic, Horticulture Cluster Development Program, we have read कि this is under which ministry, clusters यहाँ पर exactly क्या हैं, और why exactly we are doing it and what is the aim behind it, right? Up next we have nano urea liquid. वी ऑल नो कि हम अपने क्रॉप्स में यूरिया कितना यूज़ करते हैं, तो उसी चीज़ को कंटेन करने के लिए इफ़को हैज़ लॉन्च दिस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, जिससे हम अपना यूरिया का जो एक यूसेज है वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके से अब हम कर पाएंगे. इफ़को यू ऑल नो, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है. So what exactly is going to happen this, ये एक न्यू ऑफ कोर्स ये क्रॉप्स को यूरिया ही प्रोवाइड करेगा, बट नैनो यूरिया है तो इसका मतलब है एक प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके से दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यूरिया टू आवर क्रॉप्स. सो व्हाट विल बी द अदर बेनिफिट्स, दैट इट कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूरिया बाय एटलीस्ट 50%, क्योंकि बहुत सारा तो हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, बहुत सारा तो वेस्ट हो जाता है. सो इट विल सेव आवर यूरिया अ लॉट ऑफ इट, राइट. ऑल्सो दिस इज सिग्निफिकेंट as its use by farmers will boost the balanced nutrition programs by reducing the excess use of urea, जो crops के लिए भी अच्छा है and then in turn हम लोग के लिए भी अच्छा, because we are the ones who are going to eat it, right? Thirdly, the conventional use जो है वो 30 that is जो हम यूरिया को पहले पुराने तरीके से जो हम यूज़ करते हैं, that is 30-40% effective in delivering nitrogen to the plants, while जब हम अगर nano urea हम यूज़ करेंगे, that will be 80% effective in providing nitrogen to the plants, right? और ये cost effective भी होगा. What could be better than that, right? And this will also improve the groundwater quality, reduce the global warming and the climate change, and the sustainable development will also get helped by this, right? To summarize this topic, nano urea liquid, इसके क्या क्या IFFCO has launched this और इसके क्या क्या benefits हैं, we have read, right? Up next we have Corbevix mission. अच्छा, सो कॉर्बेवैक्स मिशन क्या है? ये बेसिकली एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है, राइट. इस वैक्सीन को हमने खुद बनाया है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, ठीक है. ये वैक्सीन्स भी हम 2 डोजेस में लगाने वाले हैं, एंड दिस इज़ expected to be the cheapest vaccine available in our country, right? And this Corbevix vaccine is made up of the spike proteins, spike protein जो वायरस के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको लेके हमने ये वैक्सीन बनाया है, राइट. स्पाइक प्रोटीन्स होते क्या हैं? इफ़ यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, इट लुक्स लाइक दिस. तो ये जो वायरस के सरफेस पे जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, दीज आर द स्पाइक प्रोटीन्स, right? The sharp bumps or the protruded areas of the protruded areas of the virus, इसी को हम spike proteins कहते हैं. ये envelopes की तरह काम करते हैं, right? और इन्हीं के थ्रू वायरस जो है वो किसी भी host cell में enter करता है. So these spike proteins basically allow the virus to enter the cell of the body, right? And then it further replicates, and then it further causes disease in the human beings, right? Or wherever it enters, basically in the host body, right? वो host कोई भी हो सकता है. However, Corbevix vaccine in the spike protein alone is given to the body, so it is not expected to be harmful as the rest of the. Of course, हम क्या करने वाले हैं कि सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को हम इंजेक्ट करने वाले हैं होस्ट की बॉडी में, ठीक है. वी विल नॉट बी इंजेक्टिंग द एंटायर वायरस, राइट. सो द एक्टिव वायरस, द लाइव वायरस विल बी एब्सेंट. हम सिर्फ स्पाइक प्रोटीन होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि हमारी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए, एंड हेंस वी कैन प्रिवेंट द फ्यूचर इन्फेक्शंस. दिस इज द मेजर एजेंडा बिहाइंड इट, राइट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कोविड-19 वैक्सीन्स? सबसे पहला, फॉर एग्जांपल, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो कि यूएस ने डेवलप करी हैं, वो mRNA वैक्सीन्स हैं. इसमें क्या होता है,
कि they'll carry the molecular instructions to make the protein in the body through a synthetic RNA of the virus. इसमें भी एक्चुअली काम वही ही है कि they are going to make the antibodies through a through a different way. तो antibodies ही वो develop करने की कोशिश कर रहे हैं so that they can prevent the future infections. जॉनसन या स्पुटनिक में या फिर एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, ये भी अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं. ये वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं. इसमें क्या होता है कि किसी और वायरस का जो भी अदर देन द कोविड वायरस, ठीक है, किसी और वायरस को हम लेते हैं, उसके वर्जन को हम मॉडिफाई करते हैं, राइट, एंड द वायरस कैन एंटर द ह्यूमन सेल बट डज नॉट रेप्लिकेट इनसाइड, राइट. तो बेसिकली हम किसी और वायरस को यूज़ करके इसमें जो फर्दर जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज सेम बट द मेथड्स आर डिफरेंट इन द डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स. भारत बायोटेक कोवैक्सीन में इसमें हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज़ करते हैं. इनएक्टिवेटेड इसको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं. इसमें बेसिकली हम इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ करते हैं, राइट. हम इंजेक्ट करते हैं लाइव वायरसेस को ही जो इनएक्टिवेटेड होते हैं, जो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते हैं, राइट, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए या इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बन जाए अगेंस्ट दैट वायरस. सो द एम एंड द ऑब्जेक्टिव इज सेम but the process is different in all the types of vaccines, right? So yeah, that was all about this topic. Up next we have project 75-1. recently हमें पता है कि जो हमारा DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको डिफेंस मिनिस्टर हमारे हेड करते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया है. व्हाट इज़ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशनल सबमरीन्स? सो ये एक पार्टनरशिप मॉडल पे हम बनाने वाले हैं. 6 जो सबमरीन्स को हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, राइट. एक इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हम करने वाले हैं इन सबमरीन्स की, राइट. एंड हु विल बी डूइंग ऑल ऑफ दिस? तो 2 इंडियन कंपनीज हैं जो इसमें ये सब करने वाली हैं, राइट. मैजागांव डॉक शिप बिल्डर्स और लार्सन एंड टर्बो, जो कि मेजरली यही दोनों हैं जो करती हैं. सो दे आर गोइंग टू डू इट. द फॉरेन मैन्युफैक्चरर सेलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट आर फ्रेंच नेवल ग्रुप, जर्मन कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, मरीन सिस्टम्स, और ये सब हमने चूज़ किए हैं जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इसमें हेल्प करने वाले हैं, राइट. टॉकिंग अबाउट the most important thing regarding this topic is the project 75-1, right. तो ये एक strategic partnership model के अंडर ही इसको अप्रूव किया गया था. दिस इज़ वन ऑफ द एक मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये. जब ये अप्रूव हुआ था, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था. इसमें हमने बहुत सारे हमारा जो सबमरीन कंस्ट्रक्शन है उसको बेटर करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे इम्पोर्ट्स को हमारे इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए, राइट. हमारा जो डिपेंडेंस है बाहर के लोगों पर या बाहर के मैन्युफैक्चरर्स पर, उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस. दैट वाज द रीज़न, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट 75-1 एंड दिस द 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं, राइट. अप नेक्स्ट वी हैव सेज इनिशिएटिव. सो अगेन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? दिस कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एंड अ वेरी इजी वन. तो यहाँ पर आप मार्क्स नहीं खोना, ठीक है. मेक श्योर दैट यू ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं वो तो आप पकड़ ही लो, ठीक है. सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द वन हु हैज लॉन्च्ड दिस. सेज इनिशिएटिव इज अबाउट, सो दिस सेज इज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है. ये बेसिकली ये है कि जो भी एल्डरली पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, स्पेशली पोस्ट कोविड के टाइम पे, उन लोगों की हेल्प करने के लिए दिस इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च्ड, ठीक है. दिस इनिशिएटिव एंड अलॉन्ग विद इट a portal has been launched. So this has launched with the aim to provide one-stop access for the elderly care. कि elderly care जो बूढ़े लोगों को जितने भी केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या उनकी कोई भी मेंटल कोई भी केयर हो या उनकी जो भी एक ओवरऑल केयर है या ओवरऑल जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती है, everything will be available as a one-stop access at the stage portal under this stage in under this sage initiative, right. जितने भी जितने भी प्रोडक्ट्स की उनको ज़रूरत है, जितने भी उनकी केयर करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो उनको ज़रूरत है, that will be provided under this portal, right. We have read the ministry, ठीक है. What are the features of this initiative? So this initiative aims to help startups that are interested in the field of this
ठीक है, कि ये इनिशिएटिव उन स्टार्टअप्स को भी हेल्प करने वाला है जो कि एल्डरली केयर को प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। एंड एक इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग कमेटी हम बनाएंगे जो कि उन स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करेगी, राइट, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, डिफरेंट बेसिस होंगे, जिसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं कि कौन से स्टार्टअप को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या ज़रूरत होती है इन एल्डरली की, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट में, हाउसिंग में, ठीक है, केयर सेंटर्स में, राइट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेस, क्योंकि बहुत सारे जो एल्डर लोग होते हैं टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं होते, to help them in that area, finance, food, wealth management, legal guidance, ठीक है, so all of this will be provided। तो हम वही स्टार्टअप्स ढूंढ रहे हैं जिसमें which focuses on these cares। Okay, fund, एक करोड़ का fund as a one time equity will be given to these startups, right? Ministry will act as a facilitator, right? और हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? Because there has been a rise in the elderly population India में, right? एक सर्वे ने तो ये कहा है the share of elders as the percentage of the total population हमारे country में वो increase होने वाला है from 7.5% जो 2001 में था to almost 12% 2026 तक, ठीक है, और 19% मतलब 20% हो जाएगा 2050 तक, राइट, विच इज़ ह्यूज। तो वी डेफिनेटली नीड टू थिंक अबाउट गिविंग केयर टू देम। ओके, सो दैट वाज अबाउट सेज इनिशिएटिव and the SAGE portal which comes under Ministry of Social Justice and Empowerment। आप इसको इससे भी याद रख सकते हो कि जितने भी एल्डरली, जितने भी केयर वाली एल्डर लोगों के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, दे जनरली कम्स अंडर दिस ओनली, दिस मिनिस्ट्री ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट, राइट। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट वी हैव सीड मिनी किट प्रोग्राम। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च किया है, राइट। तो ये इसका बेसिक एम यही है कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं, स्पेशली पल्सेस और ऑयल सीड्स के, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फार्मर्स को, ठीक है। और ये जो मिनी किट्स हैं, दीज विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एजेंसीज, लाइक फॉर एग्जांपल NCH सीड कॉर्पोरेशन उसको प्रोवाइड करेगा, नाफेड भी प्रोवाइड करेगा। नाफेड इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राइट, गुजरात सीड कॉर्पोरेशन, ये सब लोग प्रोवाइड करने वाले हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स में स्पेशली, राइट। सो दिस बेसिकली is to support that national food security mission of our country, right, ताकि हम अच्छे seeds अगर provide कर पाएँ तो अच्छी yield आएगी, and it will be instrumental in increasing the seed replacement ratio। Now what is seed replacement ratio? Seed replacement ratio होता है कि हमने एक सीजन में जितना भी क्रॉप प्लांट किया है, ठीक है, उस पूरे प्लांटेड क्रॉप में से हमने कितना परसेंटेज ऑफ एरिया में क्वालिफाइड सीड्स यूज़ करे हैं, ना कि हमने जो पिछले साल के बचाए हुए सीड्स रखे हुए थे। पिछले साल के कुछ फार्मर्स ये भी करते हैं ना, हम बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि पिछले साल के बचाए हुए सीड्स रख लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम उन्हीं को उगा देते हैं, राइट। सो वो हम यहाँ पर नहीं काउंट कर रहे हैं, हम वी आर ओनली काउंटिंग द परसेंटेज ऑफ दैट एरिया सोन यूजिंग those qualified or the certified seeds, right? So yeah, this is what seed replacement ratio is. Talking about the pulses and the oil seed production हमारे इंडिया में जो है, so oil seed production हमारा काफ़ी increase हुआ है, that is from 27 billion tons to जो 14-15 में था तो 36 million, ठीक है, 2021 में अगर हम आज की बात करें तो पल्सेस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है 17 मिलियन टन से 25 मिलियन टन अभी प्रेजेंट स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द सीड मिनी किट प्रोग्राम which will be distributing high yielding variety seeds, pulses और oil seeds में का, ठीक है। Up next we have SDG India Index 2021। We all know कि Sustainable Development Goals, नीति आयोग releases this, ठीक है। This is a very I think ये आया भी हुआ है UPSC में कि who releases this, तो नीति आयोग is the one who releases this, ठीक है। ये 3rd edition है। की फाइंडिंग्स क्या हैं इस रिपोर्ट के, इस इंडेक्स के? सो की फाइंडिंग्स ये हैं कि वी हैव इम्प्रूव्ड, हमारा 66 से 60 हमारा पोजीशन हो चुका है, क्योंकि हमने क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, इन सब कैटेगरीज में हमने इम्प्रूव किया है। दैट इज़ वेयर वी हैव इम्प्रूव्ड आर स्कोर। केरला has topped the index, 75 score आया है, and Himachal Pradesh and Tamil Nadu are the second and the third rankers, ठीक है। बिहार, झारखंड, असम were the worst performing states,
ठीक है। SDG इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये 2018 में हमने लॉन्च किया था, नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया था, राइट, एंड इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, वी ऑल नो दिस। और 2030 तक हमें जो SDG गोल्स अचीव करने हैं, वी ऑल नो अबाउट, देयर आर 17 SDG गोल्स, वी मस्ट नो अबाउट ऑल ऑफ देम। और हमें ये भी पता है कि 4 क्लासिफिकेशंस होती हैं SDG इंडिया इंडेक्स की। जो 4 क्लासिफिकेशंस है वो एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, इनके स्कोर के बेसिस पर हम स्टेज को डिवाइड करते हैं। अगर कोई स्टेज 0 to 49 में फॉल कर रहा है, अगर इतना स्कोर कर रहा है, तो हम उसको एस्पिरेंट स्टेट बोलते हैं। 50 to 64 वी कॉल इट परफॉर्मर स्टेट, फ्रंट रनर 65 to 99, और अचीवर हम बोलते हैं जिसने 100% स्कोर किया हो, वी कॉल इट अ अचीवर स्टेट, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. Up next, and I think this is the last topic for the day, yeah. Up next, we have World Employment and Social Outlook Report. Again, who releases it? ILO is the one. ILO is the body, International Labour Organization, releases this, right? And yeah, what are the findings of this report basically? द फाइंडिंग्स इसकी ये हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लॉस करी है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, पुअर क्वालिटी ऑफ jobs is increased, or poverty has increased, right? These are the major findings of this report. Like for example, COVID-19 की वजह से जो जॉब लॉसेस हुए हैं will reach 75 million in 2021. Can you imagine 75 million before falling 23 million in 2022? So this is what you can imagine, the plight of the people. Global employment is also going to increase. It is expected to stand of 205 million people in 2022. This is far greater than 187 million जो कि 2019 में था. एंड पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब्स, वी ऑल नो कि जो भी नई जॉब्स अब क्रिएट होंगी उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स उनमें आएंगी ही, और क्योंकि all of these things are happening, तो poverty definitely is going to come. This is one of the consequences of the job losses and the unemployment automatically, right? So with this, we come to an end of our discussion. It was a little long one, so but I hope it was informative to you. Thank you so much.